Hello, everybody, and welcome to our live Q&A session on especially for our money recovery course participants, where we help you to get solutions for all your questions, queries, doubts in recovery of your debts and any problems which you are facing in implementation of our money recovery course. So let's start with the queries which you have received, and if you have any query, then you may just raise your hand and you can speak at any point of time. So we have got few of the queries which I'll quickly start, unless if you have some query here, so we can take it up here directly. So we have received a query from, okay, let's see whose first query we have received. I would like to send a query. Haji, please बताइए विवेक जी. Can I request you to start your camera? Yeah, actually I'm driving. Okay. Oh, okay. So I mean, you may just, if you park your car somewhere. Yeah, I'm just parking the car. Yeah. Please do that. Actually, we have complained about one of our customers in MSME Samadhan. And after that, we have contacted the regional MSME office also. It is just before COVID, and till now there is no resolution. So what is the thing we can do if it is not resolved within 90 days by regional office? ओके सो आपने ऑनलाइन एमएसएमई समाधान की फाइलिंग कर दी और उसके बाद से अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया आपको? नो. आपने फिजिकल फाइलिंग कर दी? यस. वेयर इज योर जुरिसडिक्शनल एमएसएमई काउंसिल? इट इज इन सिलवासा, UT of Dadra and Daman. Dadra and okay. So of course after the COVID there has been a lot of ups and downs with different MSMEs across the country, and they have not been been able to sit regularly. तो आप एक चीज ये कर सकते हैं, एक तो आप उनके साथ फॉलो अप तो आप आई एम श्योर आप कर ही रहे होंगे. You can also write them letters. Second, एक पोर्टल है champions.gov.in. हम इसका अपडेट अभी अपने कोर्स में भी लाने वाले हैं. champions.gov.in आसान है, आपको याद रह जाएगा. वहां पर ये पोर्टल स्पेशली मिनिस्ट्री ने भी बनाकर लॉन्च किया है टू एस्केलेट द कंप्लेंट्स और प्रॉब्लम्स व्हिच यू आर फेसिंग इन योर एमएसएमई समाधान केसेस. तो आप वहां पर एक अपनी टिकट रेज कर सकते हैं, हेल्प टिकट रेज कर सकते हैं, वहां पर अपने ग्रीवेंस डाल सकते हैं. तो वहां से फिर सीधा मिनिस्ट्री की तरफ से, दैट इज लाइक एस्केलेटिंग द केस विद द एमएसएमई मिनिस्ट्री. तो जैसे ही आप वो करेंगे तो मिनिस्ट्री की तरफ से जो एमएसएमई काउंसिल है उनको एक रिमाइंडर एंड नोटिस चला जाता है, एंड इट हेल्प्स यू टू एक्सपेडाइट योर केस. दैट्स नंबर 1. हाँ, तो वो आपके लिए बहुत आसान तरीका होगा. दूसरा तरीका आप जो और कर सकते हैं कि आप एमएसएमई मिनिस्ट्री, सेंट्रल एमएसएमई मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे जाएं and you can just check the email of the joint commissioner, the development commissioner. वो आपको उनकी वेबसाइट पे मिल जाता है. उनको आप अपने केस का रेफरेंस देकर उनके ईमेल पे भी एस्केलेट कर सकते हैं कि ये मेरा केस है जो मैंने फाइल किया हुआ इस डेट से, आई एम नॉट हर्ड एनीथिंग अबाउट इट, तो रिक्वेस्ट यू टू हैव इट एक्सपेडाइटेड. तो वहां से एक पर्सनल, ये जनरली दो चीजें हम करते हैं टू गेट एक्सपेडाइटेड, क्योंकि champions.gov.in तो ऑटोमेटिक पोर्टल से चला जाता है, और ये पर्सनल भी कभी कभी वो वहां से फिर वो एक फॉलोअप चला जाता है कि व्हाट्स हैपनिंग इन दिस केस. सो दैट आल्सो शुड हेल्प यू टू हैव इट एक्सपेडाइटेड. ओह, आई सी. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स. ठीक है जी, आई होप इट हेल्प्स यू. आपने कोर्स पूरा देख लिया? हैव यू सीन द होल कोर्स? या आई हैव सीन योर फर्स्ट फुल प्रेजेंटेशन. ओके, वंडरफुल. हाउ हैज इट हेल्प्ड यू? Yes, it gave detailed information, because so many laws like that 15 days acceptance law, which we were not knowing, and we were always afraid about that only. The moment we put a legal case, they will say your material is not up to the mark. Right. So that is a good thing, that after 15 days they cannot raise any objection. It's a deemed acceptance for them, and there's not much that. Yeah. That was very helpful. Have you implemented all the other steps, invoices, contracts, and we have everything, but since we complained about it 2 years back, so what I'm thinking, I'll make a fresh complaint once again. And even now, if they don't resolve, then we'll complain in that champion.gov. You can do that. Champions.gov.in. Yeah. Thank you. Thank you, Ji.
थैंक यू जी, बाय। Okay, great. So that was Vivek Jindal ji. So let's move to our next query, which we have here. If any of you have any query, you can always unmute yourself and speak, and you can also write in the chat box or in the YouTube comments also. You can just raise your query. So we have next query from Manish ji. How to file an online complaint when buyer has ledger balance showing means he's paying lump sum for invoices raised. That is, no particular invoice can be claimed unpaid. So when the buyer, Manish ji, जब buyer कभी भी lump sum amount आपको वो शो कर रहा है ना फॉर द इनवॉइसेस रेज्ड, तो फिर आप हमेशा फीफो मेथड फॉलो करिए। इसको याद रखिए, फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। मतलब कि जो पहले अमाउंट आपको रिसीव हुआ है उसको पहले के इनवॉइसेस में एडजस्ट कर दीजिए, और जो बैलेंस बचता है that you show it as a balance due, and then you claim that amount. That's always helpful from the accounting perspective. Then how to file online complaint when the buyer had ledger. सो अगेन आप जो लेजर की बात कर रहे हैं, तो फीफो मेथड को फॉलो करके जो बाद की डेट का अमाउंट है उसे आप ड्यू की तरह रेज करिए, बिकॉज वो आपको लिमिटेशन को हेल्प करने में मदद करेगा। The next query which we have got, in list of documents required for online registration, copy of Udyog Aadhar, copy of unit registration certificate. Which registration certificate are we talking in point 3? So आप अगर रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड हैं या पब्लिक लिमिटेड है या एलएलपी हैं, तो आप अपना आरओसी का रजिस्टर ऑफ कंपनीज का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो दे सकते हैं, या आप अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं इन केस आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप है एंड यू डोंट हैव एनी आरओसी सर्टिफिकेट, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बोलते हैं कि कंपनी का कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो विद एनी ऑफ द अथॉरिटीज। We have Neelkant ji also here with us. Neelkant ji, if you have any query, then please feel free to raise your hand or type it in the chat box. Sir, I am having a retention money issue with the company. हाँ जी, can I request to start your video, Neelkant ji? Yes, sir. Thank you very much, sir. Sir, I am having a retention money issue with the company, and I have filed, means I have given them notice in format of letter of information under your what we have under the draft. I have used a good word, that letter of information. They are in communication, but sir, they have paid me means in 2 lakhs rupees. So what I have done is made a Excel sheet, means the outstanding, then received this much, interest calculation again the same I have considered as a principal. So is it correct method? हाँ बिल्कुल, इट्स वेरी करेक्ट मेथड। आपने जैसे मैंने मतलब फीफो मेथड ही हो गया ना सर? फीफो पे, हाँ फीफो पे किया, बिल्कुल सही किया। अभी सर वो लोग बोल रहे हैं कि यार हमको देना है, लेकिन मतलब अगर ये अंडर दिस सेक्शन अगर मैंने उनको इंफॉर्मेशन शेयर नहीं किया होता ना तो नहीं देते। Now they have started that our intention is noble and all these things, but they are not making payments, number one. And payment is really required, as you know that way. So what can be done? Shall I file it out once? तो आप ये कह रहे हैं कि पेमेंट वो कर ही नहीं रहे थे आपको, आपने जब ये कोर्स देखकर नोटिस भेजा तब कुछ उन्होंने बातचीत चालू की, तब वो टेबल पे आए? नहीं, पहले दिया था बीच में, मतलब मेरा 35 लाख का रिटेंशन था ना, तो 2 लाख 3 लाख ऐसे 2-3 बार दिया। फिर उन्होंने वो हमसे डिमांड भी किया था कि हमको रिटर्न फाइल करना है, तो हमने वो सब दिया भी था डिटेल्स। फिर मैं रेगुलर मांगता था तो कोई आंसर नहीं आता था, मैंने बेगिंग की लैंग्वेज यूज किया तो कोई आंसर नहीं था। फिर मैंने ये आपका ड्राफ्ट डाउनलोड करके उस पे नोटिस की जगह पे लेटर ऑफ इंफॉर्मेशन करके सेम सेक्शन में सब कैलकुलेशंस भेज दिया। देन दे स्टार्टेड कम्युनिकेशन विदिन, मतलब शाम को 7 बजे मेल भेजा तो सुबह में 9 बजे डायरेक्टर का फोन आ गया, यार ये क्या प्रेम पत्र है। फिर मैंने वो 15 दिन के बाद फिर से भेजा कि सर मेरे को पैसा चाहिए, तो उन्होंने मेल भेजा और तुरंत आंसर आया कि भाई पेमेंट करना है, पेमेंट नहीं है। कंपनी बड़ी है, लेकिन अगर मैं ये मेथड से नहीं जाता तो मुझे वो लोग जवाब नहीं देते थे। Very nice. So it helped you to get an answer and to get response from them. Yeah, I have started. They are responding in a very good manner, मतलब very best manner. लेकिन सर पैसा तो उसके लिए एक बार मैं फाइल कर ही दूं। हाँ, तो आप ये देख लीजिए कि उसमें आईबीसी एप्लीकेबल होता है कि नहीं होता है। अगर आईबीसी एप्लीकेबल है तो वो फॉर्म 3 डिमांड नोटिस, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अगर वो, इज इट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और पब्लिक लिमिटेड कंपनी? सामने वाले प्राइवेट लिमिटेड ही है।
और आपकी ये ड्यूज का डेट क्या है, कब से ड्यू है ये? मेरा ड्यूज है मतलब 2017 का रिटेंशन और 1.5 साल मतलब 2019 फर्स्ट जनवरी 2019 या 20 गिन सकते हैं। तो आप एक उनको फॉर्म 3 डिमांड नोटिस भी भेज दीजिए। वो तो भेज दिया सर। हाँ बहुत बढ़िया, तो अब आप उनकी फाइलिंग कर दीजिए उनके अगेंस्ट, तो आपको और जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा, फिर जल्दी रिस्पॉन्स आ जाएगा। हाँ 100% दे विल रिस्पॉन्ड इमीडिएटली एंड दे विल टेक इट फॉरवर्ड। पर अच्छी बात ये है कि आपके पास अब राइटिंग में है उनकी तरफ से कि हाँ हम मान रहे हैं कि ये ड्यू है और हम देंगे, पर अभी रुक रुक के देंगे। हाँ नहीं, आपने हमको पेशेंटली डिले को हेल्प भी किया, ऐसा भी लिखा है अभी तो। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। तो एक बार मतलब सर, लेकिन क्या है, अभी ये पेंडेमिक गया है ना, तो पेमेंट का रिक्वायरमेंट तो ये सब बड़ी कंपनी होती है, तो एक बार फाइल कर दूं तो निकल ही जाएगा, ऐसा है? हाँ चांसेस तो है आपकी बिल्कुल निकल जाएगा, क्योंकि वो खुद मान रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो देयर इज नो रीजन कि क्यों ना निकले वो। आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है कि सर्विस एंटिटी? सर कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन। बहुत बढ़िया। ये ट्रेडिंग के ड्यूज तो नहीं है ना आपके? हाँ ट्रेडिंग के नहीं है, कंस्ट्रक्शन के सर्विसेज मतलब हुआ। सर्विसेज हो गए सारे, बहुत बढ़िया। तो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाऊं सर? 100%, हमने तो कोर्स में भी बताया, बिल्कुल आप आगे बढ़िए। जब अभी तक आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है तो आगे भी आपको वो हेल्प करेगा एंड इट विल हेल्प यू। बाकी सर आपका जो मतलब मैंने पूरा स्टडी किया, तो रियली में इट्स एन वेरी ग्रेट अप्रोच बाय यू। आप सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? सर जो आपने मतलब मैंने आपका कोर्स को सब्सक्राइब किया था उस वक्त, और मैंने उसको स्टडी किया, और उसके बाद जो आपने हमको सब फॉर्मेट्स दिए थे डाउनलोड के लिए, इट इज एन रियली अ वेरी ग्रेट अप्रोच फॉर द MSMEs and everybody, and it really helped, and it will help to everybody, because I have approached some advocates during my course of so they were referring me to civil activities, and some chartered accountants told me that it is 3 years late dues and all these things, but your course is very much informative. Okay. Actually, what I would like to refer is that if someone wants to start a MSME or small business, if before taking GST number, he should purchase your course and got the thorough knowledge of this thing. Thank you so much for your kind words. But how it has helped you specifically? Sir, since 1 year when I was begging for my payment, there was no responses. But when I mailed the format, in the format, the demand notice and all these things, only I changed the word demand notice to letter of information, and in same format, after calculating the interest formats and all the things, when I mailed to my client, they immediately means my mail was around 6:45, and in morning 9:15 the response was there that we are arranging for payment, or please don't move ahead. Okay. और ये आपका 2017 का ड्यू था जिसपे वो लोग ज्यादा रिस्पांस नहीं कर रहे थे? हाँ, अगस्त 21 से तो आंसर ही बंद हो गया था। अच्छा। So it is really helpful. I have gone through, means before going to any legal actions, if we will go through your these things, we will be 100% safe for the relationship with the clients and payment receivables. Correct. So do you think जो हमने कोर्स का हमारा जो पर्पस है, to help all the MSMEs and business owners to be able to recover their money on their own 100%, at zero sir. cost? To my knowledge, investing here, we will be able to recover our funds with zero cost. Means no cost is needed unless and until if you want to go for that insolvency method. Otherwise, no cost is required. Wonderful. And how is the knowledge helping you otherwise in your day-to-day business? So this knowledge has made us, मतलब हमको अभी धंधा करने की हिम्मत खुल जाएगी. Yes, you can do, because we know that within 40 days, 45 days, हमको पैसा मिलना ही मिलना है. नंबर 1. और आप रिकवर कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट. आप सिर्फ बात करोगे ना कि भाई यू हैव टू पे अंडर दिस सेक्शन, और इंफॉर्मेटिव नॉलेज है. मतलब हमारे बिजनेस के लिए जो इंफॉर्मेशन है वो एक लॉयर से अच्छे, मतलब रूटीन हम अगर कोई लॉ फर्म के पास जाते हैं उससे ये स्पेसिफिक है कि मतलब जो स्पेशलाइजेशन बोलते हैं ऐसा है. तो इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर ऑल द MSMEs.
और आप कंस्ट्रक्शन सेक्टर में हैं और आपके क्लाइंट जनरली बड़ी बड़ी वो कंपनीज होती हैं हाँ जो हु आर ह्यूज इन साइज, जिनकी या डीप पॉकेट्स होती है और जो आसानी से बात नहीं करती हैं और नहीं जिनसे सर, वो लोग नेगोशिएशन में भी नहीं बैठते हैं, वो लोग हाँ, बात करते हैं। अब वो बात करने लगे हैं आपसे। हाँ हाँ, द पर्सन हु विल नॉट नेगोशिएट फॉर 25 करोड़ रुपीस कॉन्ट्रैक्ट, वो डायरेक्ट बात करेंगे, तो दैट इज रियली। चलिए, वंडरफुल। सो ऑल द बेस्ट टू यू नीलकंठ जी। मेरा गोधरा में सर फैक्ट्री भी है एक, तो अच्छा, मैंने एसोसिएशन को भी बोला है कि एक बार आपका मतलब एक वो रखे, हाँ जी, वेबिनार। तो और मैंने मेरे बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर फ्रेंड्स को भी ये रिफर किया है कि जो, क्योंकि सर जो इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर रहे हो ना, वो मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि लॉ बहुत बड़ा है लेकिन 100% बेसिक से समझाते हो। चलिए, एनी सजेशंस फॉर मेकिंग इट मोर बेटर फॉर ऑल द एमएसएमईज ऑफ द कंट्री, बिकॉज हमारा एम है कि इंडिया के सारे एमएसएमईज उसको देखें और उससे सर अगर शांति से बेनिफिट इसको लें। समझते हो ना, एक बार सुन लेते हो ना जो स्टेप्स आप देते हो, तो इट्स 100% कवर्ड। अगर ये लॉ जो मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या गवर्नमेंट ने बनाया है उसके अंदर मतलब आपने कोई भी कुछ अपने तरफ से छोड़ा नहीं है। Even the formats are ready, only just you have to change the names and amounts. हाँ जी, एक सजेशन सर मैं दे सकता हूँ, जो हमारा एक्सेल सीट है ना इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, उसके हाँ अंदर जी, अगर पार्ट पेमेंट्स आया हो तो उसका अगर एक वो ऐड हो जाए, तो मतलब उसके लिए मुझे थोड़ा मेहनत करना पड़े था कि हर एक पेमेंट के लिए अलग अलग बार कैलकुलेशन करना पड़ा था, और दैट टाइम तो अगर वो उसमें कुछ हो सकता है हाँ, तो मान लो कि पेमेंट रिसीव डेट से एक साथ डाल दे के तो ऑटोमेटिक हाँ, कैलकुलेशन हो जाए, तो एक अच्छा रहेगा। हाँ, वी अग्री टू इट, बट क्या होता है ना, जो बैंक रेट है, हाँ दो चीजें हैं, एक तो बैंक रेट और जो पार्ट पेमेंट आता है वो अमाउंट और उसकी हाँ, डेट क्या होती है, वो तो फैक्ट्स आपके पास ही होते हैं, तो वो नहीं वो डेट के डाल हिसाब देंगे से ना। बैंक रेट बदलते रहते हैं। नहीं मान लो कि मेरा 1 जनवरी का आउटस्टैंडिंग है, हाँ, अभी मेरे को उसमें 30 लाख रुपया है, उसमें से हाँ, मुझे 3 लाख रुपया 31 मार्च को मिला, तो अगर हाँ, वो मैं डाल दिया तो आपका एक्सेल तो ऑटोमेटिक ही सब कैलकुलेट कर रहा है। अभी हाँ, मेरे तो को आपका 5, एक का तो इंटरेस्ट आ गया। हाँ, हाँ अभी मान लो कि वो फ्री प्रिंसिपल हो जाता है, हाँ, पेंडिंग है वो वापस प्रिंसिपल हो गया, तो हाँ, अगर उसको हम मतलब एक शायद आपका एक्सेल में बहुत ही अच्छा पावरफुल नॉलेज है, आपके पास बहुत बड़ी रिसर्च टीम है, तो हाँ जी, अगर हम मान लो कि उसके बाद उसी को मतलब अगर पार्ट पेमेंट्स वाला है तो उसको अगर एक्सेल में थोड़ा बहुत चेंजेस करके डाल देवे, तो एमएसएमई को क्या है, सिर्फ पेमेंट्स डालता रहेगा, बाकी तो सर आप इतने सालों का एक हमको दे चुके हो, जो शायद आरबीआई को अपने वेबसाइट पे रखना चाहिए, या तो ठीक है। एमएस, बराबर है, या आप कुछ बोल रहे हैं, या तो एमएसएमई की वेबसाइट पे में जब कैलकुलेशन के लिए जो कैलकुलेशन ओके, चार्ट है ना आपका, सही बात, सही बात, तो क्योंकि किसको क्या पता है क्या रेट है, और मतलब एक बार फिगर डाला तो पूरा उसका चार्ट निकल जाता है। निकल के आ जाता है। तो दैट इज द होल पर्पस। एक ही चीज एडिशन है कि अगर पार्ट पेमेंट का एक कॉलम आ जाए। ओके ठीक सर। है जी, विल आल्सो लुक इनटू इट। थैंक यू सो मच फॉर द सजेशन। बट ऑल इन ऑल जो हमारा मोटो है कि बिजनेस ओनर्स इस कोर्स को देख करके कैसे रिकवरी करनी है जीरो कॉस्ट, खुद से बिना कोड जाए हुए, आपके हिसाब से वो सॉल्व हो रहा है, सब राइट? मतलब 10 आवर्स आपने इन्वेस्ट कर दिया तो लाइफ टाइम सॉल्यूशन, वंडरफुल, ठीक है जी, जो मतलब थैंक हमारे वीडियोस देख लिए ना, जितना यू। हाँ टाइम जी, आपने बनाया है उतना, तो हाँ जी, उसके बाद ही डोंट, किसी के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। यही पर्पस है। थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स, दिस इज थैंक यू व्हाट वी आर सर। ट्राइंग। एंड आई होप यू हैव आवर कांटेक्ट डिटेल्स। अगर आप जो बोल रहे थे, वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट योर एसोसिएशन विद द वेबिनार एंड ऑल दैट। वो आप विल, आवर टीम विल रीच आउट टू यू एंड दे विल हैव इट फिक्स्ड विद यू। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच नीलकंठ, थैंक यू। Haji Bharatwaj, you have raised your hand. You may please unmute and also start your video. Hello, sir. Good evening, sir. Good Hope evening. you're doing fine. Thank you so much. Bataiye. Sir, so there is this one client who had recently approached me for this money recovery matter. And this matter is against police department of the state. So they've supplied goods for around 60 lakhs or something. And now they are trying to claim it back. It's been 9 months since they've not even responded to them. So the claims against the police department. Can we invoke these provisions to claim it against the government department also?
The MSME Act provisions? Yes. Yes, you can. If it's fulfilling the other conditions, so you can invoke against the government departments as well. No problem. They have supplied goods basically. If it's a trading thing, then you cannot. I mean, they can do it as a threat, but ultimately it will get rejected. But otherwise, they can do it. They're not traders. They manufacture certain forensic materials and they supply it to. Wonderful. Then too they can. There is no reason why they. Sir, in the filing column, we have to furnish information with respect to their email address, phone number, and all. We don't have all those information. What do we do that? Take it from online, या जो भी उनके ऑफिसर होंगे या टेंडर में भी ईमेल दिया होता है जनरली, क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट को टेंडर निकला होगा ना, आप उस पे देखेंगे तो इट हैज देयर नंबर एंड ईमेल आल्सो, तो वहां से लेकर आप उसको दे सकते हैं वहां पर. ओके, फ्रॉम दैट. ऑलराइट सर. राइट. सर, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए मैं एक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा. पहले रेलवेज है ना, वो बहुत डिले पेमेंट करता था, लेकिन तो हम लोग ने जो मतलब काम ही करना बंद कर दिया था. लेकिन अभी जब कोर्स करने के बाद पता चला कि नहीं, ये लोग 45 डेज में किसी भी तरह पेमेंट कर देते हैं. वंडरफुल. तो मतलब तो एक मतलब कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तो पेमेंट कर ही देगा. दे विल नॉट गो एनीवेयर. हाँ, दे विल नॉट गो एनीवेयर. और कभी कभी डिले होता है तो जब उनको वो नोटिस जाता है, हाँ, तो भरद्वाज जी आप तो पहले वो नोटिस भी भिजवा सकते हैं, और जैसे उनको ये पता चलता है तो इमीडिएटली दे डू इट. यस यस. जानकारी के अभाव में अगर डिले भी होता है तो दे डू इट. और सर, दूसरा आपके कोर्स से मुझे ये भी जानने मिला कि अगर आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नहीं है फिर भी एमएसएमई का आई थिंक जा सकते हैं ना. हाँ, आप जा सकते हैं. बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ये ऑर्डर दिया है कि रजिस्ट्रेशन पहले का होना जरूरी नहीं है. आप बस फाइलिंग के पहले कर दीजिए. जब ड्यूज थे तब आप रजिस्टर्ड नहीं थे, बाद में रजिस्टर की तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट्स ओनली अ प्रोसीजर रिक्वायरमेंट. बट ये काउंसिल टू काउंसिल वैरी करता है. कोई काउंसिल मानते हैं, कोई काउंसिल नहीं मानते हैं. ओके. तो सर, ये लोग, ये जो हायर बड़ी कंपनी होती है वो काउंसिल में सेटिंग नहीं कर लेगा? नहीं, इतना आसान नहीं होता. मतलब इट्स लाइक अ क्वाज़ी जुडिशियल बॉडी. इट्स नॉट सो इजी, और ऐसा होता नहीं है जनरली. हाँ, और वैसे जो हम लोगों ने अगर ये स्टडी करके गए हैं ना एक कोर्स, तो क्या होगा, हमको भी सब पता ही है, तो फिर उनको डिफिकल्ट हो जाता है. अगर नॉलेज नहीं है तो आपको कोई परेशान कर सकता है. लेकिन ये सीखने के बाद आप सेक्शंस में बात करोगे तो आई डोंट थिंक किसी को, मतलब एनीबॉडी वुड like to challenge or go in these things. Then you become very powerful. Once you have the knowledge, then you become very powerful. And they also taken aback कि अच्छा इनको इतना सब पता है. सर, मैंने वो सेक्शंस में डाला ना कि अंदर सेक्शन दिस तो समझ गए कि नहीं, अभी इसमें कुछ करने का नहीं है, पैसा देने का है. हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो तो लॉ है, पार्लियामेंट ने उसको बना दिया है, तो देयर इज नॉट मच व्हिच कैन बी डन, एंड इट सुपरसीड्स ऑल योर कॉन्ट्रैक्ट. आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्रोविजन भी उसके सामने पीछे हो जाते हैं. Sir, I have few more questions for you. Yes, please tell me. Sir, there's one more matter where there are multiple units which owe money to a person, and they're all of the same corporate entity. So will the claim lie individually against each units, or will it be against the corporate entity only? It will be against the corporate entity. You can address it to unit, but it's going to be the entity who's responsible. So the contact details, email ID, and all that stuff has to be of the entity, right? It must be of the same PAN number, right? But or different GST numbers. I'm not aware, sir, but I think the PAN number is the same. PAN number will be the same. The GST will be different if it's in different states. So use it as per the work order. Go as per the work order. So I have to file different claims for each work order? Yes, always. Even though it's the same entity, you should file different claims for different work orders. That always helps. That creates more pressure. But all of it will lie under the jurisdictional MSCFC, right? That one. Because the claimant is same, na? Because it ultimately goes to your own jurisdiction, wherever the party is located. Okay, sir. Sir, also one more thing. The opposite party now has moved IBC for insolvency. And from there, they have filed a form called Form B. I'm not aware as to what is the legal thing behind it. And in that Form B, they have accepted to our claim amount that we are claiming, which is around 62 lakhs or something. Can that be used as an evidence here?
as well? And that can definitely be used as an evidence. But if the resolution petition it gets accepted, then you'll not be able to file before MSME, because once they move to the NCLT and if it gets accepted, then a moratorium is applied. And in the moratorium period, no legal proceedings can be initiated against that company. So if it is still not accepted, then you should move fast. Still not accepted as in, can you repeat that? By the NCLT. Their petition by the NCLT. No, only after the CRPF process has started, CIP or whatever process it is. Oh, then you cannot file with MSME because moratorium is applied now. Now, no legal proceedings can be initiated against them. Can't we become a secured creditor after filing this? Not that has to be done before. That has to be done before, correct? That's what we have told in the course. That has to be done before. Now you should file your claim, which is IRP. So there's nothing we can do about it now. All you can do is that approach their IRP and file your claim with him. Oh, they have agreed to whatever claim we have asked the IRP. Oh, then you'll have to wait for the resolution scheme and the final NCLT order. And whatever scheme is approved and whatever percentage has been allotted to you will come towards the unsecured creditors. Operational creditors are unsecured creditors. Okay. अगर सर पहले हो जाता है तो पूरा पैसा मिलेगा. हाँ, पहले अगर होके आपके पास ऑर्डर होता इनके CIRP प्रोसेस के पहले का, तो फिर आप एक सिक्योर्ड क्रेडिटर बन जाते, बिकॉज इट्स लाइक अ कोर्ट डिग्री, और आप फिर एक स्टेप ऊपर चढ़ जाते. तब पूरा शायद मिले ना मिले, पर ज्यादा मिलता आपको, और मिलता श्योर कुछ ना कुछ. ओके, तो मतलब ये इन लोगों को भी पैसे का ही प्रॉब्लम है. तो मुझे अभी लेकिन आई थिंक मैनेजमेंट इज ऑन. तो हाँ, बैंक इज एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑल दिस थिंग्स, बट आई डोंट थिंक दे हैव गॉन फॉर एनसीएलटी. तो एक बार कर देना चाहिए. हाँ, तो आप जल्द से जल्द कर दीजिए. जल्द से जल्द. Sir, apart from the interest that we're getting from the MSME Act, can we also claim the bank interest that we have paid for that amount? You can only claim one interest. You cannot claim two interest. What if the bank interest that we have paid for that particular thing exceeds the compound interest that we're getting from the Act? नहीं होगा. Is there a remedy? It cannot be. It can never be. Because it's 3 times of the bank rate, and that too compounded. 15% के ऊपर पड़ता है. जो हम लोग ये कैलकुलेट करते हैं ना, वो 15 मतलब 3 टाइम्स कैलकुलेट करते हैं कंपाउंडिंग, तो इट कम्स अराउंड 15 to 17%. The bank interest, and when you make it in simple interest terms, it becomes 24%. Yes. Bank interest is always 6, 7, 8% at best. Okay, thank you, sir. सर, ये जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा वो टैक्सेबल होता है या ये दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्वेश्चन? That's chartered accountant's question. I mean, it will follow. जो MSME में हमको अगर इंटरेस्ट मिलता है तो टैक्सेबल ही होगा. वो टैक्सेबल ही होगा. टैक्सेबल ही होगा. हाँ, बराबर है. ओके सर, ठीक है जी. Thank you so much जी. We'll just have time for one last question which we have received from again Manish ji. So what should be done if there is no agreement or purchase order while filing online complaint or MSME समाधान portal? So Manish ji, as again we have studied the course, अगर आपके पास कोई work order या purchase order नहीं है, तो you can just get an affidavit executed saying that your enterprise was not issued any work order or purchase order or engagement letter for the goods supplied or the services rendered by your enterprise. ये हमने chapter 7.3 में इसका एक format भी वहाँ दिया हुआ है, which you can use for your benefit. Okay, let me take one more question. It is said that even outside India cases can be dealt in facilitation council, where it is written that facilitation council can take up outside India. So council can, MSME council can issue or award an order for the same, और वो दोनों consulates को भी जा सकता है. And ये जो MSME समाधान पोर्टल है उसके FAQs में भी ये बात clearly लिखी हुई है, which can be checked from there. सर, ये बुक नहीं मिला है टॉप 3 सीक्रेट्स वाला. It is on the way. It has now been published because of the COVID. It was a little delayed, और आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा. और हमारा एक्सेस तो 6 months का ही होगा ना कोर्स में एक्सेस तो? हाँ, जो भी आपको उस वक्त मिला था वेबिनार में 6 months का होगा आपका एक्सेस. बुक आ जाएगा? हाँ, बुक आ जाएगा आपके पास. Very shortly it will reach you.
It may have also been posted rather. I think सर मतलब उसमें कंटेंट तो जो आपने सब फॉर्मेट्स दिए वही होगा ना? हाँ, knowledge and the formats as well. Both things are there. Okay, so we'll take one last question. Is there any other questions from the participants? I see that Galaxy M20 you have just joined. आपको कोई सवाल है? So I'm not able to upload invoices more than 10. So you just can make a sheet and upload that sheet. उसमें आप सारे invoices की list डाल दीजिए, so that you are able to get all the invoices online. और फिर physical copy में आप सारी की copies लगा सकते हैं. One of our debtor outstanding since 2017 at the time our company was not MSME, but after recent amendment our company came under the purview of MSME. Can we file our claim under MSME provisions, and second, if already a filed civil suit? हाँ, तो आपने अगर पहली बात अगर पहले रजिस्ट्रेशन नहीं था पर अभी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन स्टिल गो एंड यू कैन डू दैट. और अगर पर आपने अगर सिविल सूट ऑलरेडी कर दिया है तो फिर आप एमएसएमई काउंसिल में उसको नहीं ले पाएंगे. So great. So I hope we have answered all the queries here, and thank you everybody for attending. Thank you Neelkanth ji as well for attending and for your kind words, and we wish everybody a quick recovery. Okay, I see that we have got another question. I'm not able to see your name. आप Galaxy M20 के नाम से आपने लॉगिन किया है, तो if you have any questions तो फिर you may just unmute yourself and ask. Hello. Yes, please tell me. सर सर्किट इलेक्ट्रो कंपोनेंट से बात कर रही हूँ मैं. आसमा. एक्चुअली हमारा एमएसएमई में है ना रिजेक्ट हो गया है. हमने ऑनलाइन सबमिशन किया था जुलाई में, बट वो 3 मंथ्स के बाद रिजेक्शन हो गया. उन्होंने रीजंस भी नहीं बताए, और हमने हमारे पर्सन को अभी भेजा था रिसेंटली चेंबूर ब्रांच में काउंसिल में इंक्वायरी के लिए, बट उन्होंने बोला कि ये ट्रेडर्स के लिए नहीं है कोई भी कोड, अब आपके लॉयर से बात कर लो, ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए ही है, अब ट्रेडर है ना इसलिए रिजेक्ट हुआ है. उन्होंने ये रीजन दिया है. हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल ठीक रीजन दिया है. ये मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए है, नॉट फॉर ट्रेडर्स. बट सर फिर हम बट हमारा कोर्स में भी बताया कि हाँ जी, बट सर ट्रेडिंग है, हमारा ट्रेडिंग है तो हम नहीं कर सकते क्या एमएसएमई में? नहीं, एज ट्रेडिंग एंटिटीज कैन नॉट डू अंडर एमएसएमई अभी के लिए. तो अभी तक ट्रेडर्स को उस परव्यू में नहीं लिया है एमएसएमई में. अच्छा, और सर तो हम नोटिस भी नहीं भेज सकते फिर कोई भी कंपनी? नहीं, नोटिस भेजिए ना, नोटिस भेजने में कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज़ नोटिस में कोई प्रॉब्लम है नहीं. अच्छा, हमने 2-3 बार नोटिस भेजा है, बट उनका रिवर्ट कुछ आया नहीं वो नोटिस पे, मतलब पेमेंट रिकवर नहीं हुआ है. तो ट्रेडर्स के लिए नहीं हो सकता है क्या एमएसएमई में? आई जस्ट वांट टू नो. नहीं, एमएसएमई में ट्रेडर्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है. आपको सीधा उसमें वो करना पड़ेगा, सिविल सूट, या अगर एनसीएलटी एप्लीकेबल है तो एनसीएलटी देख लीजिए. आप फॉर्म 3 डिमांड नोटिस भेज दीजिए और फिर उनको वो कर लीजिए. बट हम एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, तो जस्ट बिकॉज वी आर रजिस्टर्ड इन एमएसएमई सो वी कैन नॉट क्लेम द आवर ओवरड्यू पेमेंट. हाँ जी, नहीं कर सकते. वो पोर्टल रजिस्ट्रेशन दे देता है, पर एमएसएमई समाधान में ओनली मैन्युफैक्चरर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स. But in the due course, you didn't clarify that the trading should not be claimed in MSME, sir. We are not aware of that. नहीं, हमने ये बताया है. आप कोर्स को देखेंगे ना, उसमें क्लियरली मेंशन्ड है. क्योंकि हमने this is not for traders, only manufacturers and service providers. अच्छा, अगर हमारा कंपनी traders can send a notice and file it only as a threat, पर जब वो हेलो सर, सॉरी. हाँ जी आप क्या बोल रहे हो? आपका वॉइस नहीं आ रहा है. आपकी आवाज कट रही है आपकी. हाँ, अब सर नाउ इट्स क्लियर. हेलो सर, नाउ इट्स क्लियर. हेलो. हाँ, प्लीज टेल मी. हाँ जी. हाँ तो वही सर मुझे पूछना है कि हम आई कैन हियर यू, प्लीज टेल मी. हम कैसे रिकवर करें हमारा पेमेंट्स? वी आर वेरी स्ट्रेस इन दैट. हमारे बहुत सारे पार्टीज है जो पेमेंट्स कोविड की वजह से नहीं कर पाए. हाँ, तो ऐसा ही सेड आपको सिविल प्रोसीडिंग करना पड़ेगा.
बट हमने MSME सेशन सिविल प्रोसीडिंग इज योर बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, तो ये सब MSME में हमारा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, मतलब हम ब्रांच में सबमिट कर ऑनलाइन फिर कैसे होता है सर? ऑनलाइन अगर ट्रेडिंग है तो ऑनलाइन सबमिशन कैसे फाइल हो रहा है, ऐसा मुझे पूछना है। वो पोर्टल ना अलाउ कर देता है। अच्छा, गई मैं। हाँ जी, पोर्टल अलाउ कर देता है, पर जब वो उनके पास हियरिंग के लिए जाता है तब वो रिजेक्ट कर देते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you so much, everybody. Thank you for joining, and I hope the session has helped you. And till the next session. Sir, हाँ जी नीलकंठ जी, क्योंकि अगर हम आपका प्रोफेशनल वो लेना था, हमारे 2-3 दूसरी भी इश्यूज है दूसरी कंपनी के, तो उसमें आप कैसे मतलब चार्जेस होता है? हाँ, we can discuss the same. मैं आप अपना नंबर दे दीजिए, my team will call you and they'll fix up a call. अब बताइए क्या नंबर है आपका? 98259. Can you please note down the number? I have. लेकिन फिर सर आपका टीम का क्या है, मतलब कोई स्ट्रेट आंसर नहीं दे पा रहा है, मतलब I have tried. They will contact you. They'll fix up a meeting. बताइए 98259. I will write it down. 98259. 1158. ठीक है जी. They'll 98259-1158. Okay sir. They'll reach out to you and they will fix up a meeting. ठीक है जी. Thank you. Thank you. I hope to see you all in the next Q&A, which is going to be the first Friday.